particularly when we talk about bad faith. So it is typically, you can say, associated with, you can say, lack of faith in the others, and that can be a faith in a morality, faith in a concept, and all these things you can say are associated with this concept. And no doubt in this play as well, we find the philosophy of bad faith. So Paul Sartre clarifies two distinct modes of being in the world in his book Being and Nothingness. The first is being in itself. पहला जो concept है वो being in itself है, which is now inanimate objects exist in the world around us. कि किस तरह से जो बेजान चीजें हैं वो दुनिया के अंदर रहती हैं. These beings exist explicitly as objects. For example, a piano is a piano and is unable to actively choose to become something else. वो कुछ और नहीं बन सकती. जारी सी बात है, they are mere existing. जितनी भी बेजान चीजें हैं, they are just existing. A sense तब होगी when they are giving meaning to their self. A piano cannot think about itself and can be, you can say, thought about others. It can never be its own subject. Being in itself is contrasted with being for itself, which is what human beings fall under. इंसान जो है वो being in itself, you can say, being for itself जो है, being for itself जो है allows for true consciousness and unique property of free will. मतलब जो है वो ये true consciousness के साथ है, unique property of free will है. This type of being is able to determine the meaning or a sense of their, you can say, own existence. The ability to determine one's own meaning is daunting. However, Sartre describes human being as condemned to be free. कि आप आजाद हैं, being for itself. कि हाँ, हम मौजूद हैं, और इस वजह से मौजूद हैं कि that we are living in this world and we have the right to, you can say, give meaning to our life. Because with freedom comes responsibility, and with responsibility comes existential anxiety. Human beings attempt to escape existential anxiety by giving up their freedom to others. कि वो अपनी जो फ्रीडम है वो मतलब दूसरों को जो है by giving up their freedom to others, कि वो दूसरों को अपनी फ्रीडम जो है वो दे सकते हैं, by कि वो सॉरी तर्क कर सकते हैं, माफी चाहता हूँ, their freedom to others. Humans allow others to humans to create meaning for them. कि इंसान ये मतलब जो है वो एफर्ट करता है कि वो अपनी जिंदगी का मतलब खुद बनाए, और which is you can say a form of what Sartre refers to a bad faith, कि जिसको वो bad faith कहता है. In a broader sense, bad faith encompasses any form of self deception, कि जब आप अपने आप को धोखा देते हैं तो that is what we call, you can say, a bad faith. Bad faith can take many forms, whether it be living in the past, कि आप past में जी रहे हो, or defining one's being as social category, या आप समाजी हैसियत में जिंदा रह रहे हो. तो फॉर एग्जाम्पल सार्टर आर्ग्यूज दैट इट इज इम्पॉसिबल टू बी अ वेटर, कि आप सिर्फ इंतजार नहीं कर सकते, कि जस्ट लाइक वेटिंग फॉर गोडो के अंदर यू डू ऑब्जर्व कि जिस तरह से लोग जो है वो इंतजार करते रहते हैं, आप इस तरह से मतलब जो है वो सिर्फ इंतजार नहीं कर सकते. यू देयर इज अ नीड टू गिव मीनिंग टू योर लाइफ, और आपने अपनी जिंदगी का मतलब जो है वो खुद से डिसाइड करना है. दिस इज अप टू यू हाउ यू आर गोइंग टू डिसाइड द मीनिंग ऑफ योर लाइफ. जी. जी. A man can be better at some point in his life, but that doesn't define his entire existence. हाँ, कि वो The category एक of कर रहा better होता है has been some pushed point in upon. life, लेकिन उसकी इंटायर एग्जिस्टेंस इससे नहीं नजर आती. The category of waiter has been pushed upon a human being by others. इंसान वेट करे, और ये वेट जो है वो दूसरे इंसानों की वजह से होता है. Most of the time humans are unable to transcend their roles or social categories, कि वो अपने roles और social categories को transcend नहीं कर सकते. Instead we measure our self worth by gauging our performance in these social categories, कि हमारी जो performance है किसी भी social category के अंदर वो क्या है. तो one might find meaning in being a good feminist, एक अच्छा feminist होने के नाते जो है वो अपनी जिंदगी का मतलब तलाश करता है. A star athlete or a renowned scholar, one rarely finds meaning in simply existing well, कि एक बंदा जो है वो बहुत कम तरह से मतलब जो है वो मीनिंग तलाश कर सकता है in simply existing well. Other times we seek relationship with others, हम दूसरों के साथ अपने रिलेशनशिप जो है वो बनाते हैं to escape existential anxiety, ताकि
जो हमारी जो एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी है कि हमारा मकसद क्या है, हम क्यों आए हैं, उससे बचने के लिए। तो we can say pursue a relationship not because we are attracted to others but because we like how to look, how they look at us, वो हमें कैसे देखते हैं, वो हमारे मतलब क्या सोचते हैं। We avoid becoming our own subject to avoid self criticism। हम अपने आप को तनकीद नहीं करना चाहते but we prefer the false reality, हमें दूसरों की ओपिनियन दरकार है that the others look gave us। Sartre calls this being for others। The play No Exit by Jean-Paul Sartre is an elaborate allegory for bad faith। The playwright, you can say, uses characterization of Estelle, Garson, and Elise to portray different modes of being। के एक being के जो different modes हैं वो उसको express करता है कि किस तरह से एक being जो है वो अपने आप को बता रहा है। Being for others, being in itself, and being for itself। यानी कि being in other दूसरों के जरिए you can say being for it others, दूसरों की नजर में, being in itself अपनी हैसियत में, और फिर being for itself और अपने लिए जो है वो जीना, ये बुनियादी तौर पर इस पर्सपेक्टिव के साथ जो है वो इंगेज होता है। जी जी And these to portray different modes of being for others, being in itself, and being for itself respectively. Stella represents being for others, which is evident in her lack of self-awareness. हाँ, कि उसको She has दूसरों की no sense ओपिनियन of दरकार self है, वो that मेकअप comes from करती है तो within. उसको अनीस Rather, she अनीस relies on का external कॉन्सेप्ट चाहिए कि objects, अनीस उसको perceptions मतलब क्या of her, सोचती है। to give her तो an identity. हाँ, तो Stella is she a has no superficial. sense of self that comes from within, rather she relies on external objects perception for her to give her an identity, जिससे उसको शनाख्त मिल सके। Sally is a superficial and naive woman obsessed with outward appearance। she outward appearance के साथ obsessed है। You can say facet of being inextricably linked to the gaze of others, कि जिसको दूसरों की मतलब जो है वो gazes चाहिए। Whenever she realizes that there are no mirrors in hell, Sally informs the others of her lack of self awareness, कि मतलब जो है वो self awareness नहीं है। Unashamedly stating, when I can't see myself I begin to wonder if I really and truly exist, कि जब मैं अपने आप को देख नहीं पाती तो मैं हैरान होती हूँ कि क्या मैं वाकई में एग्जिस्ट करती हूँ, क्या मैं जीती हूँ। ये मतलब क्या वो स्टेले का कॉन्सेप्ट है। जी जी Aeneas, who is attracted to Stella, offers to act as a mirror for Stella. Aeneas describes that what she sees about aloud to a grateful Stella. What Stella doesn't realize is that through this action, Aeneas has stolen subjectivity from her. हाँ, कि By अनीस believing ने that what उससे is सब्जेक्टिविटी जो है वो छीन ली है। By believing what Anis says about her, Stella has ceded her own ability to determine her self perception। कि वो अनीस जो है वो उसके हवाले से उसको बताएगी कि वो उसका सेल्फ परसेप्शन उसके हवाले से क्या है। The part in this logic becomes evident when Anis falsely leads Stella to believing that she has a blemish on her cheek, कि वो एक जो है वो उसके ऊपर पिंपल मौजूद है। तो Stella becomes flustered until Elise admits that there was never a pimple in the first place, के मतलब जो है वो वहां पे पिंपल जो है वो मौजूद नहीं है। तो एक तरह से अनीस जो है वो स्टाइली से कन्फ्रंट करती है आस्किंग, सपोज द मिरर स्टार्टेड टेलिंग लाइज, अगर आईने झूठ बोलना शुरू कर दे। As humans we cannot allow external objects to pass judgment on ourselves, और only the self has intentions which further the self's goals, के जो मतलब self के goal है। He is continues possessing a stele in the play। Suppose I covered my eyes, कि मैं अगर अपनी आंखें बंद कर लूं as he is doing and refuse to look at you, और तुम्हें देखना बंद कर दूं, all that loveliness would be wasted on the desert here। तो ये जो सारी चीजें हैं ये मतलब जब वो खत्म हो जाएगी। तो Stelle's obsession with looks is inherently rooted in bad faith। तो Stelle का जो you can say जो looks हैं वो bad faith के साथ associated है। She is finding meaning in her existing that can only be appreciated by being outside the self। तो you can say वो अपनी existence को meaning दे सकती है और इसको सिर्फ appreciate किया जा सकता है by being outside the self। तो beings the outside the self, कि वो अपने self से मतलब जो है वो किस तरह से मतलब जो है वो बाहर सोचे। One who is being for others will inevitably face conflict के in relationship with other people because their reason for seeking the relationship is not for love। कि उनकी जो reason है वो love के लिए नहीं है, rather one seeks a relationship because they find comfort and meaning in how their lover views them। कि एक बंदा जो है वो इस तरह इस नजर से देखता है कि उसका जो लवर है वो उसको किस अंदाज से सोचता है और उससे उसके लिए मोहब्बत नजर आती है।
बीइंग फॉर अदर्स एस्केप्स द सेल्फ, कि आप जब बीइंग फॉर अदर्स में जो है वो जी रहे होते हैं तो आप अपनी जात से भाग रहे होते हैं। द हार्शेस्ट क्रिटिक एंड ओनली बेसिस फॉर रियलिटी। और ये बात आपने वेटिंग फॉर गोडो के अंदर डीडी और गोगो के कैरेक्टर में भी देखी है कि जब गोगो को जिंदा रहने के लिए डीडी की बहुत ज्यादा जरूरत है और वो बीइंग फॉर अदर्स जो है वो उसका कॉन्सेप्ट था। द हार्शेस्ट क्रिटिक एंड ओनली, और वाइस वर्सा डीडी को भी ऐसे ही गोगो की भी जरूरत थी, ओनली बेसिस फॉर रियलिटी एंड इंस्टेड लिव्स विकेरियसली थ्रू देयर लवर्स you can say perception of them. In No Exit, Stelle is separated from her lover. Stelle जो है वो अपने सेपरेट हो जाती है अपने लवर से। Peter, she continues to trust in bad faith, however yearning. Peter dear, think of me, fix your thoughts on me, and serve me all the time you are thinking. My glancing stream, my crystal girl, I'm only half here, I'm only half wicked, and half of me is down there with you, clean and bright, crystal clear as running water. तो ये मोर और लेस ये स्टेले की ख्वाहिश थी। यू कैन से जब वो पीटर से जुदा होती है, जिसके वो बच्चे की माँ भी बनती है और बाद में उसको मार भी देती है, ये मोर और लेस इस बात का इजहार था कि वो पीटर को मतलब किस तरह से और उसकी नजर में जो है वो कैसे जिंदा थी। तो सैली हैज नो सेंस ऑफ सेल्फ विदाउट हर अदर हाफ, कि जब तक दूसरा उसके पास मौजूद नहीं होगा। एंड व्हेन शी डज नॉट हैव दैट अदर हाफ, शी इज फोर्स्ड टू रिजेक्ट हर करंट सिचुएशन एंड इंस्टेड लिव इन द पास्ट। वो फिर पास्ट में रहना शुरू कर देती है। जी। Garshin is the character which Sartre utilizes to display the lifestyle of being in itself. His reliance on others to ascribe his life meaning is most obvious in his incessant need to be told he is courageous. हाँ Garshin, upon being asked why he is in hell, responds with a half truth. I run a pacifist newspaper. हाँ Have I done anything wrong? हम्म, He doesn't admit to his desertion of the Brazilian army, हम्म। a decision that haunts him until and after his death. हाँ, तो It ये is जो डिसीजन है regret it haunts which him until causes him his to death. adopt It is bad regret faith. which causes him First, to he lives adopt in the the bad past. faith. He watches his co-workers. So first he lives in the past, he watches his co-workers discuss his desertion कि वो उसके वाले से गलत बात करते हैं, and listens as they condemn him for his cowardice. He is talking about me, वो मेरे मुतल्लिक बातें कर रहा है, nothing worth repeating. He is a swine, that's all, कि वो मतलब सुअर है. While he pretends that their gossip does not bother him, तो उनकी ये सारी गुफ्तगू उसको bother नहीं करती, and it does readers now. Otherwise, true, a later scene with Stelle. He begs her to call him courageous. वो उसको मतलब beg करता है कि उसको वो courageous कहे. Thinking her, you can say declaration will allow him to, you can say overcome his fears. कि वो उसके fears को मतलब जब वो overcome कर सके. So if you make the effort, if you will it hard enough. कि अगर तुम effort करते हो, if you will it hard enough, we can really love each other. कि हम एक दूसरे से मोहब्बत कर सकते हैं. 1,000 of them proclaiming me a coward. कि हजारों जो हैं वो मुझे मतलब जब वो coward कहते हैं. But what do numbers matter? Numbers का क्या है? If there is someone, just one person to say quite positively, I did not run away, कि मैं यहाँ से मतलब जो है वो नहीं भाग सकता. Well, that fate would save me. ये यही जो faith है वो उसको लगता है कि it will save him. Will you have that faith in me? क्या तुम्हें मुझ पर ये एतमाद है? Unfortunately, Stelle herself has a problem with being for others. कि वो भी दूसरों से opinion मांगती है, तो वो कैसे उसको opinion दे सकती है? So she cannot supply the perception that Carson aches for. कि जिसको गार्सन की जिस बात के लिए तकलीफ है. तो secondly, Carson uses bad faith by designating his life a simple being that is as a narrow social category. तो ये एक simple being है, narrow social category के तौर पर मतलब जब उसको ये एहसास होता है. By doing so, Garson is able to have sex with another woman in his own household. कि वो दूसरी लड़कियों के साथ औरतों के साथ वो सेक्स करता था while his wife was home without feeling remorse. He knew his wife could overhear them, but he also knew she would be too timid to confront him about it. कि वो उसका सामना नहीं कर सकेगी. His excuse: she was a martyr from birth, a victim of vocation. कि वो martyr थी from birth or victim of vocation. So by ascribing the social role of martyr to his wife, he dehumanizes her and creates an emphatic obstacle he's never been able to overcome. कि वो बताता है कि वो किस तरह से उसकी मतलब जब वो बीवी मार्टर थी और वो उसको डिह्यूमनाइज करता है. He cannot feel compassion for his wife when he views her as anything less than being which simply exists. तो you can say जो है वो he views her, वो उसको देखता है as anything less than as a being. कि वो you can say एक less than a being के तौर पर मतलब observe करता है.
Garson turns once again to bad faith to deal with his past sins. वो अपने past sins को मतलब जो है वो deal करता है. Rather than accepting the past as is, he relieves it. He watches over her. Yes, my wife. She's waiting at the entrance of the barracks. She comes there every day. वो daily वहां पे आती है. His wife has been faithful up till until the end. आखिर तक वो उससे वफादार रही. He is forced to watch the result of his bad faith for the rest of eternity. अब उसको ये सारी जिंदगी ये सब कुछ देखना था कि नीचे जो है वो किस तरह से उसने किस तरह के लोग जो है वो छोड़ के आया और किस तरह की सूरत हाल जो थी वो मतलब जो है वो उसके बाद सामना था. These comes closest to Sartre's idea of being for itself कि आपने अपनी मर्जी से अपनी जो शख्सियत जो है वो बनानी है. Evidenced by her acceptance of her condition and her control over the other characters. कि वो जिस तरह से दूसरे characters के ऊपर control करती है. From the outset of the play, Inez never deludes herself. वो कभी अपने आप को धोखा नहीं देती. Instead, she lives in moment and accepts her life. वो मौजूदा हालात में रहती है और जैसी जिंदगी है वो उसको एक्सेप्ट करती है. जी Inez never deludes herself. Instead, she lives in the moment and accepts her fate. Life begins on the other side of despair, becomes her mantra. Inez also never questions whether or not she deserves her punishment. As denies their bad faith, she laughs and criticizes them. Yes, we are all criminals, all three of us. We are in hell, my pets. They never make mistakes. Inez foils Estelle who is reliant on others for self-image. So she needs no external objects to give her meaning. कि उसको किसी किस्म के कोई external object की जरूरत नहीं है अपनी जिंदगी को meaning देने के लिए. She states, I'm always conscious of myself. I'm always conscious of myself. You can say in my mind, painfully conscious. Self-awareness is what you can say gives an ease control over her fate. कि जो उसको अपनी साथ पे control है. Sartre does not provide us with a perfect character, however. While she may be living her life as a being for itself, she still indulges in bad faith. वो भी bad faith है. She utilizes their weaknesses to control the other characters. वो उनकी weaknesses को ताकि उनको control कर सके. Acting as a mirror for Stelle, she falsely leads her to believe a pimple exists on her face when it does not. And she also refuses to call Garson a courageous man. तो वो कहती है कि तुम मतलब courageous बंदे नहीं हो. She is a self-proclaimed. वो एक ऐसे शख्स के तौर पर हमें नजर आती है कि जो कभी भी मतलब जो है वो अपनी नहीं देख पाता है जो है वो खुशी नहीं ऑब्जर्व कर पाता और वो मतलब बिल्कुल खुश नहीं हो पाता. तो हमें मतलब जो है वो अनीस पूरे प्ले के अंदर जो है वो एक सैडेस्ट के तौर पर नजर आती है. द पर्सन हु इज नेवर सेटिस्फाइड, हु इज नेवर हैप्पी विद हिज यू कैन से प्रेजेंट एग्जिस्टेंस. तो ये जो है वो अनीस के साथ जो है वो एक कॉन्सेप्ट जो है वो मौजूद है और ये जो है वो टिपिकली उसके साथ एसोसिएटेड है. तो ओनली कैरेक्टर इन द प्ले प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सार्टर्स आइडिया ऑफ लुक. तो ये मतलब मोर और लेस जो है वो इसके पास एक प्रॉपर जो है वो आइडिया है. A file to Sally who lives only give pleasure to others. Niece is also the other character in the play who has a profound understanding of Sartre's idea of look. Forget about others. How utterly absurd. I feel you there in every pore. Your silence, you can say, clamors in my ears. कि तुम्हारी जो खामोशी है वो मेरे कानों में गूंजती है. You can nail up your mouth, cut your tongue out, but you can't prevent your being there. आप ये नहीं कह सकते कि आप वहां से बच पाएंगे. Can you stop your thoughts? क्या अपने thoughts को आने से रोक सकते हैं? I hear them ticking away like a clock, tick tock, and I know you hear mine. कि आप मेरे भी मतलब thoughts को सुन सकते हैं. Every sound comes to me soiled because you intercepted it along the way. Why? You've even stolen my face. आपने मतलब जो क्यों मेरा चला? You know it and I don't. Her understanding is the underlying factor that allows her to live her life in better faith कि वो मतलब जब अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जो है वो जिए than the rest of the characters. Though she is you can say no evidence of the need for balance between nothingness and social goals that Sartre believed was necessary for force in order to nothingness and give our life meaning. कि मतलब जो है वो हमारी जिंदगी को मीनिंग देने के लिए हमारे पास एक सोशल फोर्स का होना जरूरी है
और अगर ये सोशल फोर्स मौजूद नहीं है तो फिर उसका अल्टीमेटली नुकसान क्या होता है कि देन योर लाइफ विल बी, तो लाइफ को मीनिंगफुल बनाने के लिए आपके पास सोशल फोर्स का होना जरूरी है। तो इन नो एग्जिट द कैरेक्टर्स स्टेले, गार्सन एंड लीज आर अननोइंगली पिटेड अगेंस्ट वन अनदर इन अ बैटल ऑफ सब्जेक्टिविटी, कि वो एक दूसरे के खिलाफ मतलब जो है वो जो है वो लड़ रहे हैं। एक सब्जेक्टिविटी की जंग है जो ये तीनों जो है वो जिसमें से गुजर रहे हैं। जी जी In no exit, the characters Stella, Garshin, and Anise are unknowing, pitted against one another in a battle of subjectivity. While hell seemingly offers them quite a bit of freedom, they choose to deal with both regrets in their past life and adversity in their current one through what Sartre argues to be a bad faith. Stella is guiltiest of this, existing as a being for others. हाँ Gershon lives as a being in itself, while Anise arguably becomes a being for itself. हाँ, तो ये इस तरह से मतलब जो वो गार्सन यू कैन से लिव्स फॉर बीइंग इन अदर्स, और जो है किस तरह से हमें गार्सन लिव्स एज अ बीइंग इन अदर्स व्हाइल एनीज आर्गुएबली बिकम्स अ बीइंग फॉर इटसेल्फ, कि जो अपने लिए जो है वो जी रही है। कंडेम्ड टू बी इन द कंपनी ऑफ वन अनदर फॉर इटर्निटी, द प्ले एंड्स विद द कैरेक्टर स्टिल एट वन अनदर्स थॉट्स, कि विल दे ever be able to escape their bad faith and coexist, वो कठे रह सकें। In no exit, Garson, you can say, comes to the conclusion that hell is the other place or hell is the other people. इसमें कोई शक नहीं है कि hell जो है वो other people हैं। And being and nothing as such states, I'm never any one of my attitude, कि any one of my actions, कि मैं कभी भी मतलब जब अपने रवैयों में और अपने एक्शन में कभी भी नहीं रहा है। By reaching the epiphany that everyone is simply a being who exists while simultaneously utilizing one's social role to better their true existence, कि वो अपनी true existence को बेहतर कर सके। One can finally live a life in good faith, कि जो एक बंदा जो है वो अपनी जिंदगी को good faith में जी सकता है। Unfortunately, the characters in No Exit never have that eureka moment. Their fictional failure to do so does not condemn the reader to the same fate. While it is easy to dismiss the play as pessimistic, Sartre is merely, you can say, critiquing the zero-sum mindset of the status quo when it comes to well-being. No Exit is a reminder that existence is only something that is what is. कि ये मतलब वही है जो ऑलरेडी है और हमें उसको एज इट इज एक्सेप्ट करने की जरूरत है। हम इसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं कर सकते।